Hello, welcome to episode number 1 of Happy High, a podcast series about adulting, mental health, and life in general. And in today's episode, we are going to dive deep into my living experience of adulting, where I'm learning and unlearning so many things at the same time. And this episode is going to be very special for me because I just turned 22 2 days back, and there are hell lot of emotions which I am feeling right now. So yeah, stay tuned. So talking about adulting, is there is a big shift happening when we entered in our 20s from our teenage, and I want to put it down everything which I have felt in these 2-3 years when I entered into my 20s, and this is going to something which everyone is going to relate. एंड सच बताओ ना तो बर्थडेज मुझे बहुत ओवररेटेड लगती है, एंड आई एम स्टिल नॉट आउट ऑफ माई बर्थडे वाइब, बिकॉज बर्थडे को लोग इतना बड़ा चढ़ा के क्यों रखते हैं, आई डोंट गेट इट. आई रिमेंबर व्हेन वी वर किड्स वी यूज्ड टू एंजॉय अवर बर्थडेज, वी वर लाइक सो एक्साइटेड दैट यस माई बर्थडे इज कमिंग, माई बर्थडे इज कमिंग, एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट डे लाइक एनीथिंग. But growing up, I realized one thing: I hate birthdays because I only know 3 people apart from my family, and on my birthdays, there will be 50 text messages, 10 voice calls, 10 video calls from the people I don't even barely remember who they are. So I feel very fake, like this is so fake and everyone is doing just a formality. So yeah, this is my message that birthdays सच में बड़ी ओवररेटेड चीज होती है. प्लीज नॉर्मलाइज बर्थडे. जरूरी नहीं है कि हर बार 12 बजे आपको विश करना है अपने दोस्तों को. देर आर सच पीपल ऑन दिस प्लैनेट हु आर रियली टॉक्सिक कि मुझे 12 बजे विश करना है, मुझे 12 बजे विश करना है. इसकी कोई जरूरत नहीं है यार. विश ही करना है ना, कोई भी टाइम पे करो. एंड एवरी डे इज अ बर्थडे. व्हाई जस्ट वन स्पेशल डे यू वांट टू विश समवन एट 12 o'clock? क्या पता मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है. तो please do not disturb my sleep and peace just because you want to be that toxic person who just want to wish at 12 o'clock. It's not necessary कि आप 12 बजे विश करो. और कुछ तो ऐसे होता है कि यार he didn't wish me birthday so I'm not gonna do the same. Yeah, it's okay if someone doesn't wish you a birthday. You should wish yourself your birthday. It's your day. Why you want to take that day away from you by other people? So please normalize this birthday thing, guys. I just want to say that much. Anyways, keeping this birthday thing aside, मैंने अपना पूरा भड़ास निकाल दिया. But the thing is कि जब आप अपनी टीनेज में से ना 20s में शिफ्ट करते हो तो बहुत सारे इमोशंस फील करते हो, और मुझे वो सारे इमोशंस अपने आप लोगों के सामने रखने हैं. बिकॉज आई नो मैनी ऑफ यू ऑल मे बी फीलिंग द सेम वे. मैनी ऑफ यू ऑल विल बी एंटरिंग नेक्स्ट ईयर और दिस ईयर इन योर 20s एंड यू रियली डोंट नो हाउ टू डील विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं होता. बट मैंने इन 3 सालों में जो भी सीखा है, जस्ट वॉन्ट टू पुट इट आउट फॉर यू ऑल. So I'll start sharing from my 18th birthday, and I remember on my 18th birthday I was so happy because I had this feeling in my head and in my belly that yes, I am an 18 now, I am an adult, I am free to do anything on this planet. And my 18th year went so good with everything. With same energy and same vibe, I entered in my 19th year and it was the same, but my life turned upside down when I turned 20. क्योंकि ना तब मेरे को ना एक सबसे बड़ी फीलिंग वो आई कि शिट यार बूढ़ी हो गई हूँ, उम्र हो रही है. This was a feeling I was feeling at that time, and I was so anxious. I don't know what to do with my life. I haven't figured anything out, like what to do. That was my first feeling, and उसके बाद चीज़ें बस सिर्फ नीचे गई है. The graph was like just moving downwards, and trust me guys, it's not a good place to be when you don't have anyone to explain you what to do and what to not. So the very first emotion I felt when I entered my 20 was of गिल्ट एंड फियर. गिल्ट बिकॉज आई थॉट कि यार मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में. आई विश कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती फालतू चीज़ें में और उसको इन्वेस्ट करती, यूटिलाइज करती अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए. काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता. दिस वॉज माई कॉन्स्टेंट थिंग, एंड सच बताओ तो दैट इज अ नॉट गुड प्लेस टू बी. बट एज अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन आई ऑलवेज हैव सॉल्यूशन. सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, what's done is done. It's not in my control, so I'll do one thing. From right now, I won't waste my any time. I just put my time into something which is worthful or it's valuable. I'll put my time and utilize it to develop my skills. So I started with this mindset.
इन द बिगनिंग, क्योंकि मुझे पता है कि अब चीज़ें बिगड़ चुकी है, अब चीज़ें मैं चेंज नहीं कर सकती, और अगर मैंने ये इमोशन में, गिल्ट और फियर के इमोशन में और टाइम वेस्ट किया तो आई एम गोना रिग्रेट अनदर ईयर के शिट मैंने और एक साल बिगाड़ दिया. तो दैट इज द थिंग. प्लीज friends, do not try to control what you just cannot. What's done is done. It is what it is. So just move on with this solution oriented mindset and get out of that feeling and try to focus on now. That was my first lesson. While talking about adulting, everyone has that, special adult moment where they felt like, yes, I am an adult now and I have my own. But it was when I started my first job, and it was proper 9 to 5 job. Guys, I hate 9 to 5. Everyone does, right? But the thing is, one day while I was working, I had this thing inside the back of my mind that जो चीज़ मुझे अभी करने में इतनी नफरत आ रही है, इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं करना, वो चीज़ मेरे पेरेंट्स ने पूरी entire life they did it for me and my brother just to give me and him a better life. And I was like, shit, you are an adult now. This is a deep shit. I never thought something like this before. So it was like I started, I shift from this self-centered kid's nature to someone as an understanding adult. I don't know if you get this, but yeah, this was my shifting thing from an self-centered kid to an understanding adult. But this is not just it. I also believe that कोई एक particular moment नहीं होता जब आपको ऐसा feel हो कि यार अब आप adult बन चुके हो. Those are series of moments sums up together and make you feel like adult on daily basis. So ये तो चलता ही रहने वाला है. I just realized that I am going off topic. We were discussing the first emotion which I felt was emotion of guilt and regret that yes, I wasted my time a lot. But this was not just it. After figuring that out कि ठीक है चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सच में सीरियस होकर लाइफ पे फोकस करेंगे, तब आता है स्टेज 2 जहाँ पे मुझे रियलाइज होता है कि शिट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेटिंग फॉर मी. और वो मेरे लिए ना बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो गया बिकॉज आई स्टार्टेड ओवर थिंकिंग अबाउट थिंग्स. आई हैड दिस पैनिक अटैक्स like what I'm gonna do, no shit, everything was going that way in my mind and I don't know how to react, how to overcome that situation. But from there I learned a very important principle of life which everyone should implement in their life कि जब तक आप कोई चीज को ना एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो चीज आपको खाई जाएगी. Acceptance is the biggest thing. The moment you accept things, yes, this is it, this is the reality, then things are going to work out and then you are going to be that solution oriented person who looks for solution and stop your brain from overthinking and anxiety. So मैंने तब एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अब हो गए बड़े, जो भी होगा देखा जाएगा. So ये थे मेरे पहले 2 पड़ाव जो मैंने क्लियर करे. बट इसके बाद तो और टफ सिचुएशन आ गई क्योंकि अडल्टिंग मजाक थोड़ी है यार, तुम्हें मजाक लगता है. द थर्ड स्टेज वॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट थिंग्स लाइक कि व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, इसको फिक्स कर देती हूँ, उसको फिक्स कर देती हूँ. आई वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट थिंग. बट एट दैट टाइम आई लर्न दिस थिंग दैट 20s आर नॉट अबाउट figuring out things. Instead, it is about exploring things, exploring options so that you can know about yourself and life at the same time. So I started exploring things. मुझे पहली चीज़ मैंने अपने दिमाग में ये फिक्स करके रख दी थी कि अगर मैं MBA कर दूंगी तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी ना, सेटल फॉर दैट. बट क्यों मुझे लिमिटेशंस में जीना है when I can be anything I want to. I can be a writer, I can be a content creator, anything. So please guys, if you are trying to figure out things कि मैं ऐसे कर देती हूँ, मुझे अब इसमें एंड गोल चाहिए कि क्या है क्या नहीं, तो फिगर आउट करना जरूरी नहीं है. आप उसको स्ट्रगल मत करो एंड जस्ट एक्सप्लोर योर 20s एंड नो अबाउट योर सेल्फ, नो अबाउट योर लाइफ, नो अबाउट पीपल अराउंड यू एंड एंजॉय योर लाइफ. यू मे थिंक दैट आई एम टॉकिंग टू मच सेंसलेसली, बट सीरियसली गाइज, एक्सप्लोर करने में क्या ही जाता है, क्या ही खराब हो जाएगा. अगर अच्छा हुआ तो ठीक, ना हुआ तो भी ठीक. या तो लड़ जाएंगे या तो फिर कुछ सीख जाएंगे. एज सिंपल एज दैट. दिस इज नॉट जस्ट इट गाइज. हमें लगता है कि अडल्टिंग इज ऑल अबाउट बिहेविंग लाइक एन अडल्ट, नेविगेटिंग अवर इमोशंस, फिगरिंग आउट
about things and God knows what. But I think adulting is major thing about learning and unlearning so many things. क्योंकि बचपन में हमने बहुत सारी गलत चीज़ें अपने दिमाग में अज्यूम करके रखी होती है, बट हम रियल लाइफ में जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं इट्स वेरी डिफरेंट. तो मेरे लिए तो मेरा पूरा सच बदल गया. बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अनलर्न थिंग्स एज वेल. अगर आपने कोई चीज़ पकड़ के रखी है तो प्लीज डू नॉट जस्ट होल्ड इट, लेट इट गो. व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू थिंक पैसा सब कुछ है, मैं सिर्फ पैसे कमाऊंगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इन माई लाइफ. नो, दैट्स नॉट जस्ट इट. आई रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग दैट पैसा इस पीरियड में कमाना एकदम ईजी थिंग है. आजकल कोई भी पैसा ईजिली कमा सकता है, बट उस पैसे को सस्टेन कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अनदर थिंग विच आई realized that I used to think about myself just from the external beauty कि बाहर से अच्छा दिखना है, beauty is everything, beauty standards, I have to meet those standards, everything. But no, that's not just it. External beauty is just a plus point, but main thing is internal beauty. Main thing is your mental health, your emotional health, how smart you are, how intelligent you are. So yeah, ये बाहर से जो खूबसूरत लगता है वो अंदर से कभी कभी खोखले भी होते हैं. So do not go for that. And then I learned that communication skills is important. जब बच्चे होते हैं तब अपने मन मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं किसी को, कभी कुछ नहीं बोलते हैं. अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से we react and talk to people. But कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त पे किससे क्या बोलना है और किससे क्या नहीं बोलना, वो भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So the another thing which I learned is taking care of yourself by your own. I see that many youngsters stay dependent on someone else. They expect कि कोई और आके मेरा ख्याल रखे. Please do not do that. If जो चीज़ आप अपने लिए खुद नहीं कर सकते हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और आके आपके लिए करे. So please take care of yourself by your own and take care of your health, mental health, emotional health. Just stay good from here, from your head, and everything will be fine. And there are so many things which I have learned, and if I'll keep these things into this episode, then this is going to be really long and you all might get bored. So the last thing which I want to share is choose peace over everything. I know drama सबको बहुत पसंद है बॉलीवुड देख देख के, but peace over everything, guys. If something is affecting you, yes, it is affecting you. Do not question it and do not doubt on it. Yes, it is true. Your intuition is true. So please always select peace over anything and everything. And yeah, one more thing I would like to add that कि adulting को इतना सिर पे बैठ के मत नचाओ कि yes, I'm an adult now. Do you remember that when our parents shifted from their teenage to 20s, क्या उन्होंने अपने जैसे एक्ट किया होगा? No, they were so calm and everything was so good and natural for them. They were, because they have this acceptance कि ठीक है बड़े हो गए हैं. But हम कुछ ज़्यादा ही ड्रामा करते हैं by overthinking and anxiety, जो जायज़ भी है at this period of time. But उन्हें कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई आके उन्हें समझाए या फिर उन्हें इन सारे इमोशंस के थ्रू जाना पड़े, बिकॉज उनमें तब एक पेशेंस और एक्सेप्टेंस, दो चीज़ें इतनी अच्छी थी कि they used to deal everything on their own. So yeah, do not take that thing too seriously in your head. Lastly, my advice is stay good to yourself and be patient with yourself. Adulting कोई एक destination नहीं है कि आप एक बार वहाँ पहुँच गए तो it's end, it's done. It's a lifelong journey जो कभी end नहीं होने वाली. 20s के बाद 30s आएंगे, 30s के बाद 40s आएंगे, and everything is going to be this way because we are an adults now. But कभी अंदर का बच्चा भी मत मारना. That is also my advice. And with this, I would like to end the first episode of Happy High. And I hope you guys enjoyed listening and watching this podcast episode. And you can expect me every Tuesday, Thursday and Saturday at 5:51 p.m. on YouTube and Spotify. And please give me feedback. I want to know all of your opinion, like if I'm doing great, if I'm not doing good, please just let me know in the comment section. And also, bye bye, take care, lovey doveys. I love you all.